All right, so today we'll be starting off with paper number one, Islamiyat, and today we'll be doing the 15 Quranic passages that are in your syllabus. Before you have to keep in mind that when we talk about the 15 Quranic passages, these 15 Quranic passages are basically divided into three different themes. And what are those themes? Allah in Himself, Allah's relationship with His messengers, and Allah's relationship with the created world. Panch, Panch, or five. 555 passages are divided into these three themes. Now, many of you think कि Quranic passages में से you will be asked like आपको 3 से 4 passages दिए होंगे और आपको कोई से 2 select करके you have to write the main theme and the importance. Well, that's not it. Question number 1 तो we know, but the question number 2 that is compulsory question. उसमें भी आपके पास Quranic passages का ही सवाल आ सकता है दोबारा. और क्या सवाल आएगा? 10 marks के जैसे we have 3 10-mark possibilities. For example, what do the Quranic passages tell us about Allah in Himself? Or what do the Quranic passages tell us about Allah's relationship with the created world? अब Allah's relationship with the created world में आपको सारी सूरज का जिक्र करना पड़ेगा in a 10-mark क्वेश्चन 3 to 4 पैराग्राफ्स आप बनाओगे, ठीक है, और उसके अंदर सारी सूरज की थोड़ी थोड़ी समरी दोगे. अगर आते हैं कि डिस्क्राइब हाउ what are the Muslims what do the surahs teach the Muslims about Allah's relationship with his messengers, और फिर 4 मार्क भी कोई आ सकते. तो आपने जितनी सूरज आपके थीम की होंगी विच इज रिगार्डिंग द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द 10-mark क्वेश्चन. So today we'll be starting off with the very first theme, which is Allah in Himself, जिसके अंदर आपको सूरह नंबर 1 to 5 आती है. Starting off with the Ayatul Kursi. Now, Ayatul Kursi also begins with the God in Himself. ठीक है? It begins with the Shahada. Shahada means oneness of Allah and the belief in Tawheed. This is one of the what? One of your articles of faith. ठीक है? और ये जितने यहाँ पे ये आंसर्स लिखे हुए हैं ऑफ द थीम एंड इम्पोर्टेंस, दीज आर द वंस दैट यू हैव टू राइट इन द पेपर वेरी वेल. और ये सब में कंप्लीट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, क्योंकि हर थीम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव ऑल्सो एडेड अ रेफरेंस एज वेल. इट्स नॉट जस्ट द एक्सप्लेनेशन, इट्स ऑल्सो द रेफरेंस. क्योंकि आप ये ना सोचे दैट यू ओनली हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन, आपको रेफरेंस मेन थीम और इम्पोर्टेंस के अंदर भी देने होते हैं. सो रेफरेंस इज ऑलवेज very, very important. Remember that. So the theme of this verse from Surah Al-Baqarah and God in Himself begins with Shahada and then elaborates on Tawheed. Tawheed is the belief in Allah's oneness and that He has no partner. It tells us about Allah's authority and that He is free from all human weaknesses and limitation. He is a supreme being, has no human characteristics. There is nothing whatever like unto Him. Now, whatever you are talking about, यहाँ पे first point में you have to add this reference. फिर यहाँ सेकंड पॉइंट में जो आप उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपेयर कर रहे हैं अल्लाह को, यू हैव टू ऐड द सेकंड रेफरेंस. एंड अल्लाह नोज एवरीथिंग. जो गुजर गया है, जो हो रहा है, जो आना है, नो वन अदर देन हिम नोज इट. तो उसके मुताबिक इस थर्ड पॉइंट के लिए आपने भी एक और रेफरेंस डाला, दैट ग्लोरी टू यू ऑफ नॉलेज वी हैव नन सेव दैट यू हैव टॉट अस एंड देयर इज नथिंग दैट अल्लाह डज नॉट हैव अथॉरिटी ओवर. देयर शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 2. ठीक है, 2 रेफरेंसेस आर मोर देन एनफ. 3 to 4 तो यार बहुत ज्यादा है. ठीक है, 3 to 4 एंड अ लॉट. 2 आर मस्ट. ठीक है, अगर आप 2 रेफरेंसेस थीम में डाल सकते हैं, 2 रेफरेंसेस इंपॉर्टेंस में. बल्कि थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैंने यहाँ पे अभी आई एम गोइंग टू अपलोड अ फाइल ओवर हियर फॉर यू इन द ग्रुप, जहाँ पे आई हैव ऑल द रेफरेंसेस कंबाइंड एज वेल. ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लेट मी शो यू दैट बुक एज वेल. And I am sharing you 2 files in the group. One of the group, हाँ, ये जो मैंने दोनों फाइल्स अभी आपको ग्रुप में शेयर किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू ओपन अप दोज फाइल्स यू वुड फाइंड व्हाट. जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे आपके पास सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे. 36 पेजेस की बुक जो बनी हुई है, दिस इज जस्ट अबाउट द रेफरेंसेस. स्टूडेंट्स को आते हैं कि हम रेफरेंसेस कहाँ से याद करें, कौन से चैप्टर्स में लिखे हैं. अब वही हदीस से उठा के लिखते हैं क्या, ऊपर सूरह से उठा के लिख दे एक पार्ट, नहीं. ये आपको पूरी लिस्ट मिलेगी जो मैंने आज फाइल शेयर की. दैट इज हाउ यू गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स in this paper. References are the key to your answer. Why are they key? एक तो knowledge है, एक तो आपका content better, style better, but आपकी understanding, आपका structure, आपकी वो जो आंसर में एक स्टाइल आता है ड्यू टू दोज रेफरेंसेस, इज नॉट जस्ट द कंटेंट कि बच्चे को कितना आता है. इट्स अबाउट हाउ ही डेवलप्ड द आंसर बाय एडिंग दो रेफरेंसेस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट.
अब इसी सूरा की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, नाउ दिस पैसेज टेल्स मुस्लिम अबाउट तौहीद, Allah's majesty and glory, and the theme is important for Muslim as it strengthens the belief of Tawheed and condemns shirk. Allah forgives all sins but shirk, and there is a repetitive mention of God's authority, knowledge, and power, which strengthens the beliefs of Muslim. The passage is important in the daily lives of Muslim as it is recited multiple times daily. The Prophet recommended its recitation every morning and night from protection from evil, and the Prophet said कि जो आयतल कुर्सी recite करेगा between prayer, nothing can stand between him and paradise except death. मतलब जन्नत का रास्ता खुल जाएगा. It's a gateway to paradise and a source of protection for Muslim. What a wonderful importance. ये देखिए आपको यहाँ पे reference A है और ये reference B है. दो references are more than enough. और उसी reference से related आपने यहाँ इन 3 लाइनों के अंदर उसकी importance बताया की, और यहाँ पे आपने importance of reciting आयतल कुर्सी बता दी along with the reference number B as well. ठीक है. अब P2 जो होता है, यस P2 इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्कोर, इन वहां पे जो हदीस है, हदीस के कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास पहले दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा वेर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइदर राइट, वहां पे आपको मेन टीचिंग्स और एक्शंस लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हदीस हमारे लिए दैट डजंट ब्रिंग दैट इंपॉर्टेंस अनलेस वी एक्ट ऑन इट. Surah is bringing us the importance. Surah is bringing us knowledge. But जो hadith होती, that brings us importance. Why does it have immense importance? क्योंकि that is not only just bringing your knowledge. That would be knowledgeable and that is an important thing unless you act. Unless आप वो action करोगे. Unless by looking at those main teachings, अगर आप वो action perform करोगे, then we can say कि हाँ हमने हदीस से कुछ सीखा है. So there's a clear difference between surahs and hadith. सूरा के अंदर बात होगी कि व्हाट हैव यू लर्न, द थीम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे आप P1 के अंदर इधर बता दोगे. ठीक है. 4 पॉइंट्स आप इधर लिख दोगे, 4 पॉइंट्स आप इधर लिख दोगे, 2 रेफरेंसेस आपके इधर आ जाएंगे और आपके पास 2 रेफरेंसेस इधर आ जाएंगे. बट पेपर नंबर 2 के अंदर व्हेन यू आर सॉल्विंग द हदीस क्वेश्चन, वहां पे हदीस क्वेश्चन मेन टीचिंग्स लिखनी है और इंपॉर्टेंस की जगह हमने क्या लिखना है वहां पे इन पेपर नंबर 2, एक्शंस. क्योंकि हदीस फोकसेस ऑन एक्शंस, प्रैक्टिकल लाइफ. टीचिंग्स हुई, सूरह ने बताया, कुरान ने बताया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और हमने उनका किया हुआ खुद अप्लाई करना है, एंड दैट वुड बी योर एक्शंस. तो वो भी हम डिटेल करेंगे, मैंने सब बुक्स और सब अपलोड कर दिए सब कुछ. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, मूविंग ऑन टू द सूरह अल-अनाम. इसका अगर थीम देखते हैं, दिस आल्सो elaborates ऑन तौहीद, क्योंकि अभी तक हम थीम 1 पढ़े हैं. व्हाट इज आवर थीम 1? अल्लाह इन हिमसेल्फ इज आवर थीम 1. ओवर हियर अल्लाह टॉक्स अबाउट तौहीद, कंडेम शिर्क. शिर्क क्या होता है कि किसी को भी अल्लाह के साथ एनालॉजी करना, कंपेयर करना, मैच करना, कॉलिंग हिमसेल्फ. ठीक है. और क्वालिटीज मैच करना. दिस passage tells us that he does not have a family, no son, no parents. He begets nor is begotten. And the passage refers to the unbound knowledge, power, and grasp on his created universe. इस तरह के लफ्ज आप यूज करोगे, ये मार्क्स देता. This is what makes your answer an impressive answer. This is something that will make your answer impressive. To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and the passage stresses on the sublime nature on God and the incapability of humans to imagine God or his qualities. Now, importance क्या है? Muslims to understand Tawheed. Muslims need to learn that God is too sublime to be perceived. He is everywhere. He is powerful. We should not neglect God. We should not condemn shirk. हमें shirk नहीं करना चाहिए. We should not compare Allah. क्योंकि ये एक unpardonable sin. अगर ये unpardonable sin है, only then Muslims would feel the importance, ना कि इसकी इतनी importance क्यों है, क्यों हम तौहीद पे बिलीव करें, क्यों करें, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता. ये है ना आपकी इंपॉर्टेंस. Allah forgives not that partners be set up with him. This is the reference जो आप अपने आंसर में यूज करोगे. Then we have next is Surah Fusilat. This verse is from Surah Fusilat and it describes the theme of God himself, mentions the things of the nature जो God की majesty और beauty दिखाती है. We cannot see God, but can we see his creations? हाँ, हमें God की power का evidence चाहिए. Where is that evidence? Creations, heavens, earth, दिन, रात, सूरज, चांद, फल, पौधे, ये सब क्या है?
फुसीलत. सूरह फुसीलत बताती है the theme of God himself again, the power of God just in a different way, because we cannot see the power of God. Obviously what we can see is, behold, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for of men of पूछना तो है understand. And the verse पता commands us to पड़ा हुआ worship the creator of the sun and the moon, लाओ not इधर the उसे creation. Your Lord has decreed that you worship none but Him, and all things are created except Allah. Created things are unworthy of worship. So this नहीं पढ़ी हुई नहीं एनीवे important इसका बहुत दिमाग खराब है is Allah, the creator, होना चाहिए क्यों the नहीं पता inventor. आधी क्लास Allah's perfection make him the only one worthy of worship. Importance के the passage is important because it urges Muslim to observe various objects of nature. ठीक है. Read this importance just a second. अच्छा. These are all things in the heavens and on the earth, and passage asks Muslim to identify the real creator through his creations that bear witness of his existence. This helps Muslim develop a strong belief in Tawheed, and Muslims should be grateful to Allah for all his blessings and worship to one supreme God. अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमने creations तो देख ली. And once we have seen the creations, what we are going to do now, we have to obey Allah, because now we know how powerful He is. Now we know His creations are so important. So you we worship and you we ask for help. कि अगर मदद भी चाहिए तो अल्लाह से, इबादत भी करनी है तो अल्लाह की. Muslims are taught to directly worship Allah and not seek means of worship from others and His creation. Your Lord decreed that you worship none but Him. Another surah, Surah Al-Shura, also describes the same theme, which is Allah in Himself. Allah in Himself के अंदर आपके पास 5 surahs आएंगी, and this is the 4th one. Now the verses are from Surah Al-Shura, and the theme of this passage is God in Himself. The passage talks about Tawheed, and it tells us about God's oneness, His grandeur and authority. The verse, which is repeated several times in the Quran, that His are all things in the heavens and on the earth, establishes His authority and power over everything in the universe. Shirk is condemned, and the passage also refers to another article of faith, ki belief in the angels. Because angels also know about the power of Allah. They are also busy in prayers and they invoke the mercy and pardon for the humans who sin. वही अल्लाह से जाके हमारे लिए माफी मांगते हैं जब हम गुनाह करते हैं. The passage also touches on Allah's mercy, and Allah forgives no matter how many times Muslim sins. There is no one as merciful as Him. Allah says in another जगह पे that my mercy overpowers my wrath. I guess he overcomes था, बल्कि नहीं, overpowers ही था. My mercy overpowers my wrath. ठीक है. जितनी अल्लाह की सजा है, लेकिन उससे ज्यादा अल्लाह जल्दी माफ करने वाला भी है. नाउ इससे क्या इंपॉर्टेंस मिलती है कि अगेन कम सिंस करें. गॉड्स एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए, हिज अथॉरिटी एंड ग्लोरी, क्योंकि एंड में ऑल अथॉरिटी इज विद अल्लाह, ऑल ग्लोरी इज अल्लाह. And it is important for the Muslims to believe that Allah has uncountable number of angels worshipping who do nothing except what Allah commands them. And it tells us से about सामने God's mercy and how Muslims should ask for forgiveness. Walaikum assalam, Ibrahim. वो बहन मुसा. वो तब से ना Zoom अपडेट हो रहा था इससे ज्वाइन नहीं हो रहा था Okay, ठीक है. No matter how much one falls into the sins, there is still room for forgiveness. मतलब कि इससे हमें पता लगता है that Allah is the most beneficent, the most merciful. मतलब if we even अगर गुनाह हो भी जाते हैं, अल्लाह की सजा कम है, merciful ज़्यादा है, माफ करने वाला ज़्यादा है. तो who should we seek for forgiveness? Allah. Because Allah says, despair not from the mercy of Allah, for Allah forgives all sins. Very important. Surah Ikhlas, again defining the theme Allah in Himself. The theme of this passage is God in Himself, and it outlines the fundamental aspects of Tawheed. It declares God's oneness and condemns shirk, and there is no God but He. It further highlights God's oneness by saying God's nature cannot be compared to that any other when Allah is. Because again,
Allah in himself, he is unique, he is one, there is no God but he, there is no one like him, no one can be compared. सारी चीजें कहाँ पे आती हैं सूरह अल-इखलास में. Meaning he always has and always will be there. Furthering the belief in Tawheed, हमारा ज़्यादा belief strong कर देते Tawheed पे, that Allah is uncreated and he overpowers everyone and everything and has no end. It also teaches that Allah does not have any family, he is one. Allah says, how can he have a son when he has no consort? अब इससे क्या importance मिलती है? Again, strengthening our belief in the articles of faith, Tawheed, oneness of Allah, Shahada, summed up in one concise surah. एक concise surah के अंदर देखिए कैसे sum up हो गया सब कुछ जो हमने ऊपर 4 सूराज में पढ़ा था. Muslims learn, देखो importance की जब बात आती है, importance में क्या है main word to focus on? Learn. हर जगह importance में you would hear learn. From this passage that God is unique in all aspects. This uniqueness and supremacy of God highlights the limits of humans in front of God. And it is important as it condemns shirk and tells Muslims to stay away from it. Allah says that there is no God but I, therefore worship and serve me. And Muslims ही ये recite करते हैं कहाँ? प्रेयर में. जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? सूरह इखलास, या दूसरी रकात में, तीसरी रकात में आप क्या सूरह नास पढ़ रहे हो, लेकिन ज्यादातर सूरह इखलास, जमात में सूरह इखलास, which is equal to 1/3 of the Quran. And that was all for theme 1 of Allah